Hello, bankers. A very good morning to all of you. Welcome back. So, I hope I'm clearly audible and visible to all of you. Welcome and very good morning. So, guys, in this particular session, we are going to discuss unit number 19, which is working capital finance. All right. So, very small unit and again very easy to understand and very important one. Okay. So when it comes to the working capital finance, basically companies like as a banker, we used to provide credit facilities to the organizations for the to meet their short-term requirement, basically for their operational activities and all. Okay. And we have so many tools, आपका instruments through which we generally provide credit to the institutions or the firms or companies and all. Okay. And what are the areas, RBI guidelines and others that we are going to discuss in this particular session. All right. So, working capital management, working capital finance, which include the basic concept of cutting. Then we have working capital cycle, importance of liquidity ratios, or which is also known as net working capital. Method of assessment of bank finance. This subtopic is very important. Working capital finance to information technology and software in industry. Then we have bills receivable and financed by the banks, bills, after discounting and receivables. Then we have guidelines for RBI discounting and rediscounting of bills by banks. Trades आपका ठीक है. Then we have non-fund based working capital, which include majorly LC and others, ठीक है. और आपका other related working capital, ठीक है. So there are so many subtopics, and these subtopics are related to like how there is an interaction between bank as a financial institution as well as the companies, and how we are meeting with their requirements and all. So that generally comes under this one. So one by one we will be discussing these particular one, and from today onwards, guys, we'll be having one session in the evening itself, for the practice purpose. So Monday, Tuesday, Wednesday, basically I tried to cover up like with the help of recording also. But now onwards, आपका we will be having two session for ABM on regular basis. One is आपका practice driven and another one is आपका in Brahma series. Basically, we will discuss the important concepts and all, so you guys can build your concepts, and these concepts are definitely going to help you out in your upcoming examination. So we will start our discussion with working capital. I hope everybody knows about the working capital, or it is also known as operating cycle. It is a cycle of which start with cash and it end with cash itself. Okay. So how companies basically they are managing their overall cash flows in the organization. Okay. So let's say we have some sort of cash or capital. Okay. Then we convert this particular one into raw material. Okay. So cash to raw material. Then sorry, we create आपका inventories, stock in progress. Then we basically sell those particular goods. So those inventories become आपका finished good, and finished good we generally sell those particular one to the different vendors and all. And then it again आपका converted into cash. So working capital cycle, it is a cash to cash cycle basically, where we are like every company they have their own credit policies. We generally take raw material on credit and we sell goods are on आपका credit. ठीक है. तो जैसे हम लोग कोई भी किसी भी कस्टमर से आपका लेट्स से इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग दिस मार्कर, so the raw material required for this particular one, we have a billing cycle ki, let's say if they are supplying right now, so let's say this entire cycle is for 3 months. So we have some sort of commitments ki we will make you payment after 2 months or 3 months. Okay. Then we manufacture those particular one and we convert into inventories, we convert into aapka finished good, we sell. And for the receivables, let's say we have a aapka billing cycle of 1 month and all. Okay. So we generally try to make a balance between this particular one, so we can continuously we can fulfill our commitments and all that generally comes under this one. Okay. So now it is generally known as it depend on ki
there are some goods which are generally seasonable in nature. That means their working capital cycle will be a longer time. There are some goods which are frequently interchangeable in nature. तो वहाँ पे आपका कहीं ना कहीं your working capital cycle will be shorter side. ठीक है, जितना shorter होगा उतना कम requirements होगी. जितना ज़्यादा आपका working capital या जो कैश टू कैश साइकिल है जितना लंबा होगा, यू विल बी रिक्वायरिंग मोर मनी और मोर वर्किंग कैपिटल, बिकॉज देर इज अ पीरियड जहां पे यू विल नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ कैश फ्लोज इन ऑल, सो यू हैव टू मैनेज दैट पर्टिकुलर वन प्रॉपरली. ठीक है, एंड फॉर दैट से कंपनीज दे जनरली अप्रोच टू बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर दी आपका वर्किंग कैपिटल फाइनेंस पर्पस. ठीक है, तो वही आपका जो ये कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट्स है अराउंड दी your overall working capital cycle or to manage that particular cycle and all. And if there is any gap, so to fill that particular gap, they generally approaches to companies. It can be in the form of like fund-based services where we have overdraft, cash credit or any other आपका short term loans, or it can be in the form of आपका non fund based services. They can ask for any sort of guarantee, or it can be in the form of bill discounting, rediscounting, or letter of credit, factoring, forfeiting. So these are the tools which are generally part of this particular. Basically, we are going to talk around all these particular things. Okay, what like how as a institution or as a bank we are going to meet कस्टमर्स दीज मेनी रिक्वायरमेंट्स आपका. ठीक है, वो फंड बेस हो या फिर आपका फी बेस हो, तो उसके ऊपर कुछ आपका वी हैव बैंक वाइड गाइडलाइंस, एक्सपोजर लिमिट्स एंड ऑल, एंड वी हैव सम आरबीआई guidelines those we have to meet, right? So when it comes to working capital, it is a cash to cash cycle which depend on the stock of raw material required to be held. Like see, we have different companies. Let's say for a raw material, for a company A, they have a kind of जहाँ पे चीजें रेगुलर बेसिस पे आपका अवेलेबल है. ठीक है, बट देर आर some sort of businesses where we do not have availability of those raw material throughout the years. ठीक है, तो वहाँ पे we have to store things and all, and their working capital cycle length is bit long. ठीक है, so that depend like what are the factors which generally decide this cash to cash cycle आपका. ठीक है, so it can be one is आपका stock of raw material, it can be work in progress आपका, how long it is taking to manufacture any goods. ठीक है, that is the one. So it is which is turn depend on the processing involved in manufacturing or आपका processing to convert raw material into finished good. ठीक है, the stock of finished good to be carried before they move to the buyers. ठीक है, so like sometime that is your inventory side कि कितने समय तक we have to hold those particular finished goods आपका. ठीक है, so there are some goods which are like on demands, they are going in the market. There are some areas जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं we generally manufacture and then we are supplying those particular things in market. तो जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, बिकॉज यू आर होल्डिंग दोज पर्टिकुलर थिंग फॉर अ टाइम ड्यूरेशन एंड दैट विल कॉस्ट यू, राइट? एंड इफ देर इज अ लाइक लाइव डिमांड्स आपका टाइम, यू आर मैन्युफैक्चरिंग, यू आर डायरेक्टली सेलिंग, obviously you will receive the cash, so your working capital requirement will be at lesser side. The credit required to be provided to the purchase as well. So these are the areas which generally comes. So the outcome आपका basically the summary, longer the working capital cycle, more is working capital requirement here. The need for maintaining the current asset here. The correct assessment of the this cycle is most important part in bank assessment of gross working capital, net working capital and bank finance. The assessment of working capital finance by bank follow assessment of working capital or current asset requirement of the enterprises आपका. ठीक है, so this is like basically less risky compared to terms loan, but still we have to like there are some जैसे we have tendon committees recommendations आपका, or even like sometime there is some sort of siphoning of funds as well, so we have to take care around those particular things and accordingly we have to fulfill these one. To assess or to judge the overall requirement, we generally use liquidity ratios. Basically we use net working capital ratio, overall requirement of that particular business. So that is generally known as liquidity ratio. It is आपका majorly it is net working capital ratio. How that like what is the overall gap and how much, let's say the current asset is आपका
1 crores and current liabilities is suppose that आपका 50 lakhs. That means net working capital is आपका 50 lakhs. ठीक है. So or even the requirements of that particular business. ठीक है. So let's say there is a gap, negative gap आपका working capital requirement is let's say 1 crore rupees for that particular business, and how much we are going to finance out of that particular 1 crore rupees. ठीक है. उसमें से current asset की requirement कितनी होनी चाहिए and all that generally comes under this. So providing working capital finance, the liquidity ratio, especially the current ratio, current asset divided by current liabilities, play a very important role in assessment, sanctioning decision and monitoring. The assessment involve stipulation of minimum net working capital to be brought by the enterprise from its long-term sources. The result in minimum current ratio आपका more than 1. Usually we prefer आपका current ratio in between 1.2 to 2 आपका. ठीक है. This is the आपका like favorable current ratio for any enterprise. ठीक है. So result when it comes to want to the enterprise maintain it all the time. ठीक है. This is normally mentioned in the terms and conditions of sanction and become an important tool for the bank to monitor the use of funds by the enterprise as well. Okay? So liquidity ratios, they generally help us sorry, so to find out ki how that company itself they are managing their overall short-term cash, and it helps us to manage the things as well. Okay? Abhishek sir, very very good morning. ठीक है. No, this is not the very first video. ठीक है. This is I have started with the module C आपका. ठीक है. Module A is done by Piyush sir. I'll do one more set for that particular one. ठीक है. So now I'm doing module A आपका C. Morning आपका basically the concept part, and evening will be doing आपका practice. ठीक है. Regular till your examination, and my next 10 days will be fully dedicated to your AVM subject. ठीक है. Concept are must. You have to have go through these particular things on regular basis, because this is not like JIB examination where you'll go with the MCQs and you'll pass this one. Okay? So at least once you have to go through these particular concepts. So with the help of this concept series, I'm just trying to build your basic concept and all. We have already done with unit आपका 16 and 17. ठीक है. Or sorry, 17 and 18 आपका. This is the unit number 19. ठीक है, that we are discussing today itself. ठीक है. And evening, the practice part for these 17 and 18 we have already done. Now 19 or some remaining portion of 17 will be doing in the evening itself. ठीक है. So regularly आपका you'll see session, and Saturdays and Sundays will definitely do some sort of marathon also. ठीक है. So method of assessment of bank finance. अच्छा, okay. So far story is clear, guys. Actually, I'm not feeling that good, but if I miss any point, please do let me know. Okay, so it is as simple as that. Every organization, they have some sort of working capital requirement. Working capital requirement is directly linked or proportional to their operating a cycle. Okay? So how they are converting, or what is the overall cash to cash cycle? Cash to cash cycle means, let's say we have some sort of capital, so we generally deploy that particular one. We generally we purchase some raw material, we convert that particular one into inventory or finished good, and then we sell that particular one in the market again, and then we have receivables. So sometimes we like while we purchase the raw material, we have credit policies for that particular one. We are going to make this payment after 2 months, 3 months. And when we sell goods to someone, some other vendors or the consumers, basically there also we have some sort of आपका policies कि the receivable policies basically, ठीक है, कि you have to make this payment within 30 days and all. ठीक है. So we are trying to balance that particular. Let's say we purchase inventory or raw material at with a 3-month cycle. ठीक है. 1 month we required to आपका convert this particular raw material to finished good आपका. ठीक है. Then we are selling. 1 month we required to sell that particular one in the market, and 1 month cycle we are giving to the आपका vendors to sell this particular product to their customers and pay us back by within 1 month. Okay? So what we are doing, at least like these are the 3 months and this is the 3 months. So from here we will get the payments, we will receive the payment, and we will pay that particular one to the आपका the vendors from where we generally purchase the raw materials and others. So we always want to maintain this particular one. So this is also known as cash to cash cycle. Sometimes
companies they lag in some areas. So for that lag, they generally required bank finance आपका, ठीक है. So now we are studying कि how bank is going to help in this working capital things, ठीक है. So basically this is the entire things. Another one is आपका कि कहीं ना कहीं sometime what happened, ठीक है, when bank finance working capital to a company, ठीक है, it is working capital is related to your आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ठीक है. सो इट इज डिपेंड ऑन योर नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है. सो वी जनरली असेस द आपका कैश करंट रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विच इज current asset divided by current liabilities. It should be greater than 1 or the preferable is आपका 1.22 आपका 2, ठीक है. 1.222 आपका, this is the preferable ratio. If a company is managing these particular things very well, then we can finance, if like let's say we can finance through the cash credit or overdraft or even some non-fund based service facilities also. So that generally comes under this one, ठीक है. यहाँ तक clear है सबको guys? If you have any doubt, please do let me know. I'll try to explain that particular one. So, method of assessment of bank finance. So, what are the tool basically areas आपका जहाँ से हम लोग उसको decide करते हैं, ठीक है. So, deciding on level of turnover of the enterprise आपका, ठीक है. So, how like the overall volume आपका basically if the turnover is high, their requirement will be high, ठीक है. Like for Reliance, it is totally different. For a small company, it is totally different, ठीक है. So, in case of existing enterprise, basically we generally assess them based on their past based on their balance sheet numbers or profit and loss account numbers and all, okay. So in a new enterprise, this is based on the production capacity, proposed market shares, availability of raw materials and industry norms also, okay. So or आपका even the trends or the demand and supply for that particular product, okay. Assessment of gross and total working capital आपका, okay. This is a sum of total assessment of various component which include आपका inventory, receivables and other current assets of the organization's team. So basically while we assess the working capital loans, we generally consider things like आपका overall turnover, how that company is dealing with or what is the market share that particular company have. Other one is आपका gross or total working capital. So overall things related to that particular company, the inventory, receivables and others, and accordingly we decide the things. आपका जैसे cash credit is linked with the overall stock or even it is depend on the overall like how much stock they have, because it is backed by the आपका movable goods, ठीक है, और inventory और others, ठीक है. और else आपका जैसे if it comes to this one, ठीक है, this give us a general idea about the business, how they are doing in the market and what is their market share and all, ठीक है. So that is generally based on these particular one. Sources of meeting working capital requirements, ठीक है. So when it comes to the sources आपका company, they can have their own sources, ठीक है. So there is current asset and current liabilities and all, overall their cash generation, ठीक है. It can be आपका suppliers credit. Suppliers credit means आपका let's say sometime like in especially in case of आपका foreign the import exports things ना, this happens so many times, ठीक है. Supplier credit is something जहाँ पे whoever is supplier they are providing finance to the manufacturer आपका, ठीक है. So that is a kind of thing. जैसे buyers credit and suppliers credit, this we have discussed in BFM also, ठीक है. तो supplier credit आपका basically कि like it can be कि suppose that the buyers of that particular goods and services, they are providing some sort of finance कि like it can be related in कि जैसे not buyers आपका sorry sellers आपका, ठीक है. So let's say they are providing finance to the buyers to purchase those particular things आपका, ठीक है, and to sell in the market, and that also requires some sort of a billing period. आपका other current liabilities and bank. So here we come, ठीक है. बैंक का रोल जो आपका होगा, so first companies they generally prefer these particular one, ठीक है. This is something जो आपका companies they are trying to manage their overall working capital by own, ठीक है. So ये आपका net working capital से related हो, current asset, current liabilities, how they are generating cash in the market, ठीक है. So basically buying, selling everything. दूसरा आपका they can have a suppliers credit और आपका other current liabilities, ठीक है. Then eventually they आपका other which include आपका salaries and other expenses and all, ठीक है. Then they reached out for the bank finance for the gap जो आपका
जो उनके द्वारा खुद से फुलफिल नहीं हो पा रहा है, दैट फॉर दैट सेक दे जनरली अप्रोच फॉर द बैंक फाइनेंस. ठीक है. सो कैलकुलेशन ऑफ बैंक फाइनेंस. नाउ हाउ मच मनी वी कैन लेंड. अब ऐसा भी नहीं है कि वी कैन लेंड द एंटायर वैल्यू टू दी कस्टमर्स इन ऑल. ठीक है. और जितनी भी उनके रिक्वायरमेंट्स है. So we have some recommendations from the committees or even like different methods we generally use to assess their overall working capital, and accordingly we lend them. So logically, the need for the working capital finance from a bank is equal to gap between total working capital and availability of funds. ठीक है. Total work, this is something, let's say the total working capital आपका they have 1 crores and they require, let's say, 1.5 crores. That means they require 50 lakhs. The gap is 50 lakhs and they require that particular money, or they have to arrange that particular money so they can effectively manage their overall working capital and all. ठीक है. So now but we are not going to finance the 100% of that 50 lakhs. ठीक है. Or even we can, but that depend on some conditions आपका. ठीक है. कुछ conditions जिनके basis पे we will decide this particular one. ठीक है. So the enterprise or the bank may not have much control on the supplier's credit or others' current liabilities, as these are driven by the market condition or business need. So we generally decide things on the basis of net working capital. ठीक है. Though it's like this was at the core of the recommendation of Tandon committee, which dominated by the psychic of the bankers for a long time. Though banks are now free to formulate their own policies in this regard, the method of the lending mentioned there still find places in the calculation. ठीक है. आपका we have different methods. आपका basically what Tandon committee recommended, they recommended कि आपका there should be like this, we are going to lend this particular portion. ठीक है. सो इसका हम लोग यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एंड इसका 20 to 25% शुड बी फाइनेंस बाय दी और शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय दी एंटरप्राइज इटसेल्फ. ठीक है. नॉट बाय दी आपका लाइक ऐसा नहीं कि आप 100% उसको फाइनेंस करो, उसका एक पोर्शन दैट शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय बैंक्स. ठीक है. सो वी हैव डिफरेंट लैंडिंग मेथड्स आपका. One is enterprise was required to bring net working capital of 25% of working capital gap, total asset and total current liabilities. So one things like there are banks when they provide the working capital finance, they use this particular method कि जहाँ पे जो total आपका net working capital है उसका जो overall जो requirement है उसका 25% should be the required net 25% of the net working capitals. Gap आपका that is excluding from this, means it should be contributed by the enterprise itself. Through their net working capital. Second methods आपका under this, enterprise was required to bring net working capital of 25% of total current assets आपका. ठीक है. तो total current assets का 25% should be from the enterprise itself. Third method आपका the enterprise was required to bring in as net working capital 100% of those current assets which are considered core assets and at least 25% remaining current assets and all. ठीक है. So these are the three different ways आपका to finance companies. Please do remember these one. ठीक है. These are a bit important. ठीक है. First one is आपका first method where what we are doing basically in this particular case, the working capital gap आपका. ठीक है. Current asset minus current liabilities. ठीक है. So let's say the gap is 50 lakhs or 1 crore. ठीक है. तो उस 1 crore का 25% contribution, like we can finance up to 75%. ठीक है. 25% should be from the enterprise itself. ठीक है. तो पहला चीज आपका as simple as that. दूसरा second method, enterprise was required to bring net working capital at 25% of the total current asset. ठीक है. जो उनका overall working capital requirement है, it should not exceed आपका 25% of their current assets, आपका total current asset. ठीक है. And third one is आपका enterprise was required to bring in as net working capital 100% for those current assets आपका which are core assets and आपका 25% of the remaining one. ठीक है. So these are the uses आपका which we generally have in the system and accordingly we have to finance things. ठीक है.
I'll come up with like today itself, in the evening itself, we will be practicing question around these particular one. So you have to do participate in those particular one. Okay? So you'll get some fair ideas, some case studies, or how like different enterprises they generally use these particular one that we are going to discuss there also. ठीक है? तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट होगा दैट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड विद द हेल्प ऑफ दीज पर्टिकुलर सेशन, तो जिससे कहीं ना कहीं आप अच्छे से आंसर कर पाए चीजों को. ठीक है. Now, for information technology, IT companies and software companies, we have some special requirements or provisionings, आपका guidelines for these particular companies. Okay. So RBI, following the National Task Force on IT and Software Development, issued guidelines for providing working capital finance to IT and software industry. Bank have the flexibility to adopt these guidelines based on their experiences. So in case of IT companies and your आपका software companies and all, so sometime to develop a software, then it might require 6 month 1 years and all. और आपका जैसे IT कंपनीज होती हैं, दे आर सर्विस बेस्ड आपका. ठीक है. सो अगेन वहाँ पे लाइक द असेसमेंट और द साइकिल इज आपका थोड़ा सा जैसे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इट इज इजी बेस्ड ऑन देयर टर्नओवर्स, आपका बेस्ड ऑन देयर ओवरऑल कैपेसिटी और ओवरऑल आपका मार्केट एरियाज एंड ऑल. ठीक है. वी कैन इट हेल्प अस आपका उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज एंड ऑल, इन सब के बेसिस पे यू कैन डू द कैलकुलेशन एंड ऑल. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है, देयर आर कंपनीज who have only 1 or 2 vendors and they are the contract size is very huge, and to deliver that particular contract maybe that company required 1 year 2 years and all, and there is a company who having like number of vendors, आपका number of जहाँ पे जिनको IT services आपके provide कर रहे हैं. ठीक है. And the contract size may be small, medium, large, so that is some sort of problems which we face with this particular one. So that's why we have some separate guidelines आपका net working capital, how as a banks when we will involve with their working capital finance and all. So these are some areas. ठीक है. तो ये guidelines आपके बहुत important है. So try to remember these particular one or recall these particular one. ठीक है. So assessment criteria आपका turnover will be the must one. ठीक है. और the basic things. ठीक है. Bank should assess limit based on promoters track records. ठीक है. So promoters track record is very important first thing. ठीक है. मैनेजमेंट एक्सपीरियंसेस, और मैनेजमेंट एक्सपीरियंसेस समथिंग आपका कि जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं. ठीक है. दे आर लाइक बेसिकली दिस फाइनेंसिंग इज वी आर डूइंग बेस्ड ऑन द आपका जो ओवरऑल रेपुटेशन ऑफ दैट कंपनी और देयर पास्ट हैंडलिंग, हाउ दे हैव हैंडल द प्रोजेक्ट एंड ऑल. वो तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके हैं, देयर प्रोफाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. कि वो किस तरीके से हैं और उनका एक्सपीरियंसेस क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है एंड ऑल. एंड आपका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. ठीक है. दैट ऑफिस प्रेमिसेस एंड ऑल, और डू दे हैव कैपेसिटी टू डिलीवर दोस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड ऑल, दैट वी जनरली असेस थ्रू दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है. टर्नओवर, आपका टर्नओवर मेथड. ठीक है. टर्नओवर बेस्ड मेथड, that is you'll get to know with the help of your balance sheet and profit and loss account how they have delivered the project in the past and all, कितने वैल्यू के प्रोजेक्ट आपके हैं, ओवरऑल टर्नओवर क्या है. For limit up to 2 crores, 20% of project turnover can be used. For higher amounts, the monthly cash budget method may be applied. For limit above 10 crores, the loan system guidelines are applicable. So, आपका देखो अलग अलग. For limit up to 2 crores, if their requirement is up to 2 crores, 20% of projected turnover can be used. ओवरऑल जो आपका प्रोजेक्टेड टर्नओवर है उसका 20% तक हम आपका यहाँ पे फाइनेंस कर सकते हैं. लेट्स से दे हैव अ प्रोजेक्टेड टर्नओवर ऑफ सपोज दैट 1 करोड़. ठीक है. अब 1 करोड़ का प्रोजेक्टेड टर्नओवर है, दैट मीन्स उसका 20%. ठीक है. सो दैट इज द लिमिट फॉर दिस पर्टिकुलर वन. एंड इफ यू आर गोइंग अप टू आपका लेट्स से देयर इज अ कंपनी हुज टर्नओवर इज 100 करोड़. ठीक है. तो उसका 20% इज आपका 20 करोड़. एंड इफ इट इज देयर रिक्वायरमेंट इज only 2 crore rupees, so we can आपका provide that particular loan itself. ठीक है. Limit above 100 crores, the loan system guidelines, मतलब that general आपका जो हमारे appraisal जो loan appraisal procedures हैं that must be met in this case. ठीक है. Promoters contribution आपका promoters contribution, a reasonable promoters margin can be required. ठीक है. Collaterals आपका bank may see collaterals and charge over current asset if available. ठीक है. सो नाउ देखो यहाँ पे ना कोलेट्रल इज ऑल्सो वन इशू. ठीक है. इन केस ऑफ
मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड ऑल, सो वी कैन गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ हाइपोथिकेशंस, ठीक है. सो बेसिकली जैसे व्हेन वी इशू द कैश क्रेडिट, वी इशू कैश क्रेडिट बाय हाइपोथिकेटिंग देयर स्टॉक, आपका जो इन्वेंट्री है वो अदर्स, ठीक है. बट यहाँ पे अब इन्वेंट्री ऐसी नहीं है कि हम उसको बेच पाएंगे, ठीक है. दे हैव द डिफरेंट सेट ऑफ बिजनेस एंड ऑल, ठीक है. If any collateral is available, जैसे यहाँ पे what we can do, we can go for any sort of lien or others, ठीक है. If required or like if bank is in some sort of doubt on that particular capacity of that business, will be they able to deliver that particular project or not, ठीक है. इंटरेस्ट रेट आपका, ठीक है, जनरल बोरोवर्स रेट अप्लाई, ठीक है. कंसेशनल रेट मे बी यूज फॉर दी एक्सपोर्ट रिलेटेड क्रेडिट, ठीक है. मॉनिटरिंग आपका, बैंक शुड क्रिएट अ कस्टम मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, including quarterly cash flow statement or other suitable reporting method. So for this particular section, we have a different guidelines because this business type is totally different from the other one, ठीक है. तो इनको भी obviously they also require the आपका working capital, ठीक है, they also have this working capital requirements. So थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, तो उसको उसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस आपके यहाँ पे बनती है, ठीक है. इट इज लाइक जैसे अगेन फॉर देम ऑल्सो इट डिपेंड ऑन देयर कैश टू कैश साइकिल, ठीक है, कितना टाइम उनको आपका चीजों को लग रहा है डेवलप करने में या डिलीवर करने में. सो दैट जैसे अगर टाइम इज एट लार्जर साइड, दे विल बी रिक्वायरिंग मोर आपका वर्किंग कैपिटल. बट इफ दे आर frequently delivering or if they are doing some sort of like they already have services, they just working as a third party for any vendor and all, so in that case they'll be receiving regular money or they'll be generating cash on regular basis, so that won't be any issue आपका, ठीक है. Dev sir, very very good morning. चलो, so are we up now the other part, ठीक है. So discounting and rediscounting, I hope this everybody knows. So discounting, this is something related to bills discounting, ठीक है. For MSMEs we have nowadays trades आपका, ठीक है. But apart from that also there are lots of importers, exporters. They generally approaches bank for the आपका discounting and rediscounting. Discounting and rediscounting case is आपका something like कि let's say there is a exporter, ठीक है, देयर इज अ XYZ एक्सपोर्टर हु रिसीव अ बिल आपका जैसे इंडिया के अंदर है या आउटसाइड इंडिया, ठीक है. लेट्स से द बिल साइज इज आपका 10 crore रुपीस, ठीक है. बट द डेट ऑन दिस पर्टिकुलर बिल इज दिस बिल इज रिसीवेबल आपका आफ्टर 3 months, ठीक है. जैसे आज की डेट, उसके 3 महीने के बाद ही इज गोइंग टू रिसीव दिस पर्टिकुलर मनी, और द डेट ऑफ एक्सपोर्ट वहां से आपका आफ्टर 3 months, ठीक है. लेट्स से द डेट ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज इज आपका 3 months लेटर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट आपका, ठीक है. सो नाउ अब देखो क्या है ना, एक एक्सपोर्टर है जिसने एक्सपोर्ट किया, ही इज गोइंग टू रिसीव 10 crore रुपीस फ्रॉम दिस वन एंड ही इज गोइंग टू रिसीव दैट मनी आफ्टर 3 months, ठीक है. नाउ अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने एक एक्सपोर्ट कर दिया तो खत्म हो गया कहानी. दे हैव टू एक्सपोर्ट आपका अदर पार्टीज एंड अदर्स. दैट्स व्हाई देन ओनली दे कैन बिल्ड द बिजनेस इन द मार्केट, ठीक है. एक एक्सपोर्ट से उनका लाइफ नहीं चलने वाला. सो दैट मीन्स दिस XYZ विल बी रिक्वायरिंग आपका वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, ठीक है. इट विल बी रिक्वायरिंग आपका वर्किंग कैपिटल फाइनेंस टू वर्क ऑन सेकंड प्रोजेक्ट और थर्ड और फोर्थ और 5 और 6, ठीक है. तो इनको कहीं ना कहीं दूसरे प्रोजेक्ट पे, अब जब यहां से पैसा आएगा तभी तो दूसरे पे लगा पाएगा. दैट इज द लॉजिक. सो फॉर टू फिल दिस गैप ऑफ 3 months आपका, ठीक है, व्हाट दे विल डू, दे विल अप्रोच टू बैंक आपका, ठीक है. दे अप्रोच इस बैंक, ठीक है. उन्होंने बैंक के पास है कि वी आर गोइंग टू रिसीव दिस बिल आफ्टर 3 months, ठीक है. तो अब आप क्या करो, हमें इस पैसे को अभी दे दो, ठीक है. यू जस्ट पे अस नाउ एंड वी कैन हैव अ नेगोशिएशन कि लेट्स से द अमाउंट इज 10 crore रुपीस एंड यू कैन फाइनेंस ऑन अ डिस्काउंट ऑफ आपका 2%, 5%, 3%, वट एवर द रेट नेगोशिएशन बिटवीन दीज टू. तो व्हाट बैंक विल डू, नाउ दिस ओनरशिप विल कम डाउन टू आपका बैंक, ठीक है. ये बैंक के पास आ जाएगी एंड बैंक विल प्रोवाइड द वर्किंग कैपिटल टू दिस वन. अब इट कैन बी अपफ्रंट आपका हो सकता है कि इसको पूरा आपका अमाउंट पे कर दिया गया है. नाउ बेसिकली बैंक बिकम द ओनर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स एंड और इट कैन बी सम अदर अरेंजमेंट ऑल्सो, वेयर बैंक इज टेकिंग दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट एज अ आपका एज अ प्लेज, ठीक है, कि आपका ठीक है, हम वी विल फाइनेंस यू 5 crore, 10 crore, वट एवर अमाउंट यू रिक्वायर्ड, बट वी विल फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ लोन, ठीक है, एंड दिस विल बी आवर प्लेस आपका, ठीक है. सो डिस्काउंटिंग, दिस इज द केस ऑफ डिस्काउंटिंग, ठीक है. रीडिस्काउंटिंग आपका अगेन इट इज समथिंग जैसे एलसी के केस में हो सकता है या अदर्स, ठीक है.
तो वेयर वी आर बेसिकली दैट इज फाइनेंस बाय समवन एल्स, ठीक है, जैसे इट इज फाइनेंस दिस, यहाँ पे बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सपोज दैट some XYZ get financed by ABC Financial team and bank is providing some sort of guarantee in that particular situation. तो इस तरीके से और ये बहुत सारे methods हैं which can be used to finance working capital of a company itself, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे क्या क्या requirements हैं, RBI guidelines, prudentials, norms and all, they are very very important, ठीक है। तो यहाँ पे obviously you will see the statement based question and all, तो उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। So Reserve Bank of India has issued detailed guidelines for bank when they purchasing, discounting, negotiating or rediscounting genuine commercial trade bills, ठीक है। Key points आपका जैसे policy and appraisal, bank must assess borrowers credit need, ठीक है। तो पहली तो आपका ये जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स है ये, एंड सैंक्शन वर्किंग कैपिटल एंड बिल लिमिट पर आपका वर्किंग कैपिटल एंड बिल्स limit as per the board approval policy, ठीक है। So we do have board approval policies for these particular one कि till what extent we can finance to these particular these type of borrowers and all, ठीक है। आपका इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप में जो भी रहेगा, अ क्लियर बिल डिस्काउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। बिल डिस्काउंटिंग पॉलिसी, what will be the term and condition, again that is a part of board approval policy, team aligned with the working capital policy should in place, ठीक है, for the bank at the bank level, team bank should streamline procedures using system like SFMS or adopt value dating for the timely realization, ठीक है। So this is the portal, I just missed this name, ठीक है। Can someone Google this particular one, ठीक है। And value dating आपका it is usually happen in case of where bills are or this invoice is generated in foreign currency, ठीक है। The date of trade or the date of आपका settlements, the difference between those two or the date, like value date is the date on which that settlement took place, ठीक है, that is the one. Eligibility and transaction, bill under LC should only be discounted for genuine trade, a transaction involving borrowers with a sanction limit. Bank must not provide such facilities to non-constituent borrowers unless LC specifically restrict negotiation to the bank, to that bank also, ठीक है। So LC means आपका letter of credit. It is like this bill discounting that happened. जैसे आप हमने एक चीज पढ़ा था ना आपका BFM के अंदर, we have factoring and forfeiting, that will be part of this particular one also, ठीक है। So in case of factoring, it is आपका it can be with or without recourse. Forfeiting is something आपका basically ये सब हम international उसमें use करते हैं. This can be mostly in domestic market आपका, ठीक है। So in case of your आपका forfeiting, that is मतलब most of the time that is without recourse because they are backed by, their core feature is they are backed by LC. There is some bank who is giving some sort of financial guarantee कि if that the borrower make any kind of default, we will pay on behalf of that particular bank itself or that particular borrower itself. So similarly here also there are some term and conditions and guidelines, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है। Discounting with LC issuing bank, ठीक है। So discounting with LC issuing bank is when we have two different bank, ठीक है। Let's say your bank is discounting that bill and that bill against that particular trade LC is issued by some other banks आपका, तो that is the situation, ठीक है। अब मतलब that is generally known as opening bank for LC, जो गारंटी दे रहा है कि अगर बायर डिफॉल्ट करेगा तो हम आपको पेमेंट करेंगे वाला, ठीक है। सो अब बेनिफिशियरी, देखो यहाँ पे रिलेशन कैसे बन रहा है दोनों के बीच में, यू आर डिस्काउंटिंग बिल फॉर द आपका एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्टर है जिसने एक्सपोर्ट किया है एंड हु इज गोइंग टू रिसीव मनी आफ्टर 3 मंथ्स, आप उसके बिल को डिस्काउंट कर रहे हैं, ठीक है। और एलसी इज इशूड बाय द ओपनिंग बैंक एंड ओपनिंग बैंक वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ बायर्स आपका, ठीक है। सो बेसिकली बायर एंड सेलर तो अलग एंटिटीज हैं, बायर का बैंक दे ओपन एलसी एंड सेलर आपका हु रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल एंड यू आर फाइनेंसिंग टू सेलर आपका, ठीक है। तो देयर इज अ आपका क्रॉस लिंक बिटवीन दीज टू, सो दैट इज द सिचुएशन विच जनरली कम्स अंडर दिस वन, ठीक है। अ बेनिफिशियरी में डिस्काउंट बिल with the LC issuing a bank only if they have a sanctioned fund-based credit facilities there. पहला guidelines. Beneficiaries main bank should not be deprived of cash flows. So you have to check the credit worthiness of
आपका बेनिफिशरीज बैंक ऑल्सो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो, ठीक है। रिस्क एक्सपोजर बिल नेगोशिएटेड अंडर एलसी विदाउट रिवर्स without reserve are consider exposure on the LC issuing bank, ठीक है, LC issuing bank or opening bank of that LC, ठीक है। Bill under reserve are consider exposure on the borrowers and risk weight according, ठीक है। These are very simple one, ठीक है। Basic आपका guidelines जो होती हैं LC की, ठीक है। Transaction verification, bank must verify the authenticity of underlying transaction and documents before discounting, ठीक है। This is a very like a general guidelines आपका which we generally do while we discount any bill, ठीक है, और any other transaction also. recourse clause आपका, ठीक है, बैंक शुड आपका discourage using without recourse notations that limit legal recourse, ठीक है। so recourse is आपका जैसे होना with recourse और without recourse, ठीक है। so with recourse means आपका there is some sort of guarantee or there are those type of bills are backed by some sort of collaterals and all, and आपका without recourse means they are backed by LC आपका, ठीक है। तो इस तरीके से दो तरीके से रहेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बैंक शुड डिस्करेज यूजिंग विदाउट रिकोर्स आपका, कि अगर वहां पे उसके पीछे कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, सो दैट मींस देयर इज मोर रिस्क इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर वन, सो दैट्स व्हाई इट इज मेंशन like they should discourage using आपका without recourse. Bill should be discounted based on the discretion and the credit worthiness of the LC issuing bank, ठीक है। So basically let's say there is a bank who issue LC against any export bill आपका, ठीक है, or on the behalf of buyers opening bank, तो we generally do some sort of cross check on that particular bank also। ऐसा तो नहीं कि वो बैंक ही अपना डिफॉल्ट में बैठा है या जिस भी कंट्री का वो बैंक है, सो वी जनरली डू सम सॉर्ट ऑफ क्रॉस चेक फॉर दैट पर्टिकुलर वन। प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस आपका अकोमोडेशन बिल एंड थर्ड पार्टी बिल। अकोमोडेशन बिल इज समथिंग आपका इट इज विदाउट एनी वैल्यू कंसिडरेशन, अ बिल विच इज इशूड विदाउट एनी वैल्यू कंसिडरेशन मींस यूजुअली ये आपका होता है किसमें, जैसे दो पार्टनर हैं किसी बिजनेस के उनके बीच में, ठीक है, जहां पे वी हैव वेरी हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट आपका, ठीक है। सो कोई बाय सेल नहीं हुआ है, ठीक है, लेट्स से देयर इज अ बायर, देयर इज आपका देयर आर टू पार्टीज, ठीक है, आपका ए एंड बी, देयर इज नो सेल एग्रीमेंट बीज बिटवीन दीज टू, ठीक है। यूजुअली क्या होता है when we issue LC or any other one where we have some sort of आपका सेल, ठीक है, there is a value consideration, ठीक है, कि बायर ने कुछ चीज खरीदा है सेलर से and that's why seller issues some bill of exchange on that particular one और buyer issues some promissory note आपका, ठीक है। but accommodation bill is without any आपका सेल कंसिडरेशन, यहाँ इनके बीच में कुछ नहीं हुआ, बस based on trust they are helping each others, तो that is आपका prohibited from this discounting, ठीक है। and a third party bill on without recourse basis must not be discounted, ठीक है। bill drawn by front finance companies of large industrial groups on other groups companies should be handled cautionly, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा क्वेश्चन रखना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का कोई डिफॉल्ट या अदर्स उनके चांसेस तो आपका नहीं है, ठीक है। तो बिल डिस्काउंटिंग एंड अदर्स उनसे रिलेटेड जो एरियाज है। नाउ वी हैव अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड ट्रेड्स, ठीक है। ट्रेड्स इज जनरली यूज्ड बाय एमएसएमईज, आरबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था एंड सिमिलर टू बिल डिस्काउंटिंग केस, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा होता है बेसिकली, लेट्स से एज ए एक्सपोर्टर और एज ए आपका रिसीवर आपका रिसीवर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल, ठीक है, लेट्स से देयर इज अ इंडस्ट्री जिसने कोई आपका दे आर गोइंग टू रिसीव सम मनी एंड दे हैव सम बिल ऑफ एक्सचेंज और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू रिसीव दैट मनी आफ्टर 1 month 2 months। अब छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, दे हैव लाइक उनके पास लिमिटेड पैसा होता है, दे डू हैव लिमिटेड मनी इन देयर हैंड, ठीक है। सो दे रिक्वायर आपका वर्किंग कैपिटल के लिए इफ दे वांट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, ठीक है। सो obviously they have to purchase raw material and they do not have that kind of social worth in the market कि मतलब जो वेंडर हैं वो उनको उनका जो साइकिल है वो भी बहुत छोटा होता है कि हम इतने समय तक ही आपको उधारी पे सामान देंगे वाला चीज, ठीक है। सो फॉर दैट सेक like government is working toward the MSMEs, so they come up with the one solution कि how we can finance them. Let's say there is a small आपका exporter, they did some export, they are having some sort of receivables, so they can upload those particular receivables on this particular platform, ठीक है। यहाँ पे then there are lots of banks, they'll do some sort of auctioning, ठीक है, and जो भी auction में आपका सबसे ऊपर का या सबसे कम रेट पे उसको डिस्काउंट करने के लिए रेडी होता है, you can sell it to them and
वो कहीं ना कहीं जो फाइनेंसिंग का मीडियम है, दैट इज द वन, वेरी सिंपल वन, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बेसिकली जहाँ पे वी आर अपलोडिंग एज अ स्मॉल बिजनेस हाउस और एज अ आपका रिसीवेबल्स टीम, जैसे जहाँ पे हमें जो पैसा मिलने वाला है 1 महीने 2 महीने या 45 डेज के बाद, उस बिल को हम आपका अपलोड करें ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। देन आपका अदर पार्टी मीन्स दीज इंस्टीट्यूशन बैंक्स एंड ऑल, ठीक है, they'll go through that particular one and they'll make the bidding कि we want to finance this particular one और discount this particular one at this rate, ठीक है। तो जहां पे आपको बेस्ट डील मिलेगी, you'll close that particular deal and you'll receive instant money आपका, ठीक है। So you can fulfill your other requirements, so that is the one. So to address MSME's challenges in accessing timely finance, especially in for trade receivables, the RBI launched Trade platform on December 3rd, 2014 under the Payment and Settlement System Act. Trades is an electronic platform designed to facilitate the financing of trade receivables of MSMEs from corporate government departments and PSUs through multiple financiers such as bank and NBFCs, ठीक है। फीचर आपका these are very important one, please do take care on this, ये आप लोगों ने सुना भी होगा वैसे, ठीक है। Enable discounting of invoices and bill of exchange, support both receivables factoring and reverse factoring to increase transaction volume and improve pricing. Then we have transaction are done without recourse to MSMEs, ठीक है। No guarantee is required in this case. Simply अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, participants include MSMEs, seller, corporate and government buyers and financiers, ठीक है। Provide online access for sellers and buyers, bankers to monitor discounted invoice portfolios, ठीक है। तो दिस इज समथिंग आपका जो कहीं ना कहीं MSMEs को आपका ध्यान में रखते हुए we build up this, we means RBI build up this particular platform so they can get timely and adequate credit for their आपका अदर ऑपरेशनल पर्पजेज इन ऑल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है आपका उनके लिए। तो लेट्स से इफ दे रिक्वायर्ड, इफ दे गो इंडिविजुअली, दे माइट फेस सम सॉर्ट ऑफ लाइक, हो सकता है कि उनको जो रीडिस्काउंटिंग हो रही है, जो डिस्काउंटिंग हो रही है, दैट इज एट अ हायर रेट, ठीक है। तो जहाँ पे जो फाइनेंशियर है उनके द्वारा हाई रेट आपका चार्ज किया जा रहा है, बट दिस इज द ओपन प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ, दे कैन अपलोड देयर बिल एंड जहाँ पे उनको लगता है कि दिस इज द बेस्ट मैच, दे कैन क्लोज दैट पर्टिकुलर डील, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट वन आपका, नाउ दीज वर आपका फंड बेस्ड सर्विसेज, तो देयर आर सम आपका नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज आर आल्सो देयर, ठीक है। नॉन फंड बेस्ड मींस where bank is not disbursing that money to the customers आपका or to the these particular exporter, we are providing some sort of guarantee in all, ठीक है। let's say there is a we are issuing some sort of आपका LC है, letter of credit सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और any other आपका financial और non financial guarantee आपका कि if that person we are giving some sort of guarantee कि आप उसको लोन दो, if it default we will pay you, ठीक है। that is the kind of things which is generally comes under non fund based working capital limits, ठीक है। So guarantee आपका which is we have two type of guarantee, one is performance guarantee, another one is financial guarantee, ठीक है। So performance guarantee आपका where we are part of that contract, we are assuring to the third party कि this whatever the conditions of that particular or the commitments of that particular party they will fulfill, and if they want we will reimburse you for the losses or whatever the amount, ठीक है। So guarantee that reimbursement of monetary losses to the beneficiary due to non-performance or underperformance of a contract by the customers, ठीक है। So guarantee related to contract completion within a time limits और quality performance of equipments और project आपका, ठीक है। Financial guarantee आपका, ठीक है, so जहाँ पे cover certain financial obligation or dues to the customers, ठीक है, to the beneficiary, like guarantee in lieu of security deposit, आपका earnest money और पेमेंट ऑफ ड्यूज इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन ऑल, ठीक है। जैसे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप वाला है या अदर्स आपका एलसी इज परफेक्ट एग्जांपल, लेटर ऑफ क्रेडिट आपका, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच जनरली कम्स अंडर दिस वन। को एक्सेप्टेंस बिल आपका, ठीक है। सो अनदर टूल वी हैव को एक्सेप्टेंस बिल, ठीक है। So bill of exchange drawn by the supplier on the purchaser is accepted by the purchaser and also co-accepted by the bank आपका, ठीक है। Like this is a different topic, subtopic, this is a different subtopic, ठीक है। Guarantee, we have two type of guarantee आपका, one is performance, other this
apart from this, one non-fund services is आपका, this is basically guarantee, this is the another subtopic, ठीक है, co-acceptance facility of का, ठीक है, co-acceptance of bill, so where we are like we are becoming part of that particular agreements along with the buyers, ठीक है. A bill of exchange drawn by supplier on the purchaser is accepted by the purchaser and आपका co-accepted by the bank, ठीक है. तो यहाँ पे दो लोगों के द्वारा, एक तो it is drawn by the bill of exchange is drawn by the creditors on debtors, means आपका seller to buyers. अब seller ने draw किया तो वहां पे एक तो आपका जो buyer है obviously उसका acceptance is must. दूसरा like to provide this seller आपका guarantee, हम जो buyer है उसका बैंक भी providing some sort of guarantee कि हाँ ये परफॉर्मेंस आपका एक्सेप्टेड है, अगर ये नहीं करेंगे तो हम आपको पे करेंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग्स आपका, ठीक है. बैंक एसेंशियली एक्ट एज अ गारंटर इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है. दिस इंक्रीज द सप्लायर्स विलिंगनेस टू प्रोवाइड क्रेडिट. क्यों? क्योंकि उसको नाउ ही हैज ट्रस्ट आपका कि अगर बायर डिफॉल्ट करेगा बैंक विल पे, नो वरीज, ठीक है. रिड्यूस द नीड फॉर सप्लायर टू रेज अ सेपरेट वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, और आपका फंक्शन एज गारंटी फॉर पेमेंट्स बाय द परचेजर टू दी सप्लायर्स आपका. अंडरस्टूड, ठीक है, क्लियर है सबको, आपका आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. आरबीआई गाइडलाइंस ऑन गारंटी एंड को एक्सेप्टेंस, ठीक है. सो नाउ गारंटी, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, को एक्सेप्टेंस आपका, ठीक है. मास्टर सर्कुलर dated 9th of November 2021, ठीक है. RBI issued detailed guidelines for bank on issuing guarantee and co-acceptance, focusing on risk management, customer due diligence and exposure control. General guidelines आपका, bank should primarily issue a financial guarantee, exercising caution with the performance guarantee. Guarantee should usually not exceed for 10 years. ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी है आपको, ठीक है. Not exceed 10 years. Longer duration must consider asset liability management impact, ठीक है. That will impact the ALM of the bank, ठीक है. Precaution while issuing guarantee. First आपका unsecured guarantee. If it is unsecured guarantee, there is no collaterals by the, और जिसके बिहाफ पे हम ये गारंटी दे रहे हैं, ठीक है. Avoid large long term unsecured guarantee, ठीक है, स्पेशली कॉन्ट्रैक्टेड अमंग स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप, ठीक है. Unsecured guarantee for individual must be proportionate to the total unsecured guarantee and their equity, ठीक है. आपका limited unsecured deferred payment guarantee may be given to top rated customers आपका following government policies and all, ठीक है. So these are some areas which are generally clearly specified by the RBI in their master direction, ठीक है. Exposure norm आपका, guarantee must comply with the prescribed exposure limits. Risk awareness, bank must avoid excessive contingent liabilities that exceed capital strength or benefit untested borrowers, ठीक है. Contingent liabilities आपका, these all are contingent liabilities, ठीक है. हम जैसे if we are issuing LC on behalf of a customer, that is the contingent liability. That liability may occur or may not, ठीक है. ऐसा हो सकता है कि वो डिफॉल्ट करे या आपका ना करे, ठीक है. दैट इज द वन, ठीक है. सो दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू टेक केयर. सेफगार्ड व्हेन इशूइंग गारंटी, कस्टमर असेसमेंट इज आपका, दीज आर वेरी बेसिक वन, ठीक है. रीपे इफ द गारंटी इज इन्वोक्ड, and non-fund based facilities generally discourage for customer not availing funds based facilities. In general आपका what RBI said कि generally discourage for customers not availing non-fund based facilities, ठीक है, from any Indian bank, permitted only under the board approval policy, ठीक है. Credit worthiness, past track record, security offered, compliances with KYC, AML, exposure norm and credit information, ठीक है. Negotiation of LC. So if a guarantee is issued to a customers without credit facilities, the bank may negotiate the LC, but proceed must go to the beneficiary regular banks and all, ठीक है. So these are some, like when you are entering into a bank guarantee or any sort of co-acceptance agreements and all. So banks, they should focus on these areas and they should like take care, मतलब this is something आपका precautionary areas आपका, कि जहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी डिफॉल्ट का हिस्सा ना बने, ठीक है. बैंक गारंटी आपका, यहाँ पे भी है बैंक गारंटी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, ठीक है.
So government of India required bank to use a model form of bank guarantee bonds as circulated by RBI to ensure uniformity and mutual agreements on any modifications आपका, ठीक है, जिसमें की requirements आपका जनरल requirements है. मॉडल फॉर्मेट आपका ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड पीएसयूज मस्ट एक्सेप्ट बैंक गारंटी इन दी प्रिस्क्राइब मॉडल फॉर्मेट ओनली, ठीक है, जो सेम सेट ऑफ फॉर्मेट्स आपका फॉर्म विल बी यूजिंग अक्रॉस द लाइन, ठीक है. म्यूचुअल एग्रीमेंट चेंजेस टू द गारंटी मस्ट बी agreed upon by both bank and beneficiary. Guarantee detail must maintain the beneficiary department state details or any other purpose. ठीक है. Addressing आपका guarantee must be in the name of President of India with correspondence directed to specific ministries and आपका department. ठीक है. Special provision for Director General of Supplies and Disposal, ठीक है, DGS&D. Verification will be आपका include signatory names, designation and code. Beneficiary validity and extension आपका 6 months beyond the delivery period, include automatic 6-month extension clause. Bank must obtain a customer undertaking at issuance to handle further extension smoothly. Tender provisions and stamping आपका, this is something related to बैंक गारंटी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका, ठीक है. तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस जो मतलब लाइक इफ यू स्टडी दीज पर्टिकुलर, बट यू हैव टू रिवाइज दीज पर्टिकुलर वन एंड रिकॉल दीज वन, ठीक है. ऐसा नहीं कि वैसे हो जाएगा, एंड ऐसी चीजें एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है. आपको अच्छे तरीके से टेस्ट किया जाएगा वहां पे. लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी वी हैव डिस्कस इन डिटेल इन आर बीएफएम एज वेल, ठीक है. तो आप लोगों ने अगर देखा होगा बीएफएम के अंदर वी हैव यूनिट 6 और 7 अ कंप्लीट यूनिट ऑन एलसी, ठीक है. एंड दिस इज मतलब जो सबसे ज्यादा यूज होता है आपका, ठीक है, इन केस ऑफ गारंटी वर्क आपका, जहाँ पे स्पेशली इन इंटरनेशनल ट्रेड वेयर वी आर providing some sort of आपका LC is a document which is generally providing guarantee or a surety to the seller if they fulfill the आपका term and condition of that sale invoice, they are going to receive money and that guarantee is provided by the opening bank आपका, it can be your bank, ठीक है. and it is applicant is आपका buyer, ठीक है. तो buyer के behalf पे हम क्या कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं seller को. if you fulfill the term and condition of that particular one, we will make sure कि you will receive your full payments and timely payments, ठीक है. So that is generally comes under this one. So a letter of credit is a financial instrument issued by bank on behalf of a buyer applicant, generally known as, assuring the seller of payment upon fulfillment of agreed term and conditions, submission of requirement documents and all, ठीक है. It bridges the trust gap between buyer and seller and governed by UCPRDC 600 आपका, ठीक है, ICC पब्लिकेशन नंबर 6, ठीक है. ये जो है ना, दीज आर द आपका ICC के द्वारा जो गाइडलाइंस है, ठीक है. वी हैव दिस इज द 7th एडिशन, ठीक है. इससे पहले भी बहुत सारे जैसे UCP 500, UCP 400 ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे. तो द लेटेस्ट आपका एडिशन इज UCP 600 आपका. वी हैव 39 आर्टिकल्स अंडर दिस पर्टिकुलर वन. ये हमने पढ़े थे BFM के अंदर काफी यार डिटेल में भी, ठीक है. सो दीज आर काइंड ऑफ like because देखो in case of LC most of the time the transaction happen at a international, like parties involved in that particular one are basically from the two different nation, one from India, another one from US, China or any other country, ठीक है. and every country they have their different rules regulations. तो इन rules regulation को common बनाने के लिए ICC they come up with आपका some sort of guidelines. The current guidelines, the current variant is generally known as your आपका UCP 600, ठीक है, जुलाई 2007 से जो आपका implemented है, ठीक है. तो अब देखो seller आपका is getting some sort of guarantee आपका by the opening bank or issuing bank of that particular LC कि if you अगर आप सब कुछ सही चीज से करेंगे, if you fulfill the conditions of that particular agreements, if in case आपका buyer आपका default, we will make you payment आपका. that is the role of LC आपका, ठीक है. So key elements in aspiring the NLC आपका, ठीक है. So average amount per LC based on monthly consumption and economic order quantity. Economic order quantity varies by sources, larger for imports than local purchase. ठीक है. Frequency of LC opening calculated by the dividing annual consumption by economic order quantity. Then we have frequency per month equal to 12%, 12 divided by number of LCs.
नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग एलसीज आपका, ठीक है, दीज आर द बेसिक गाइडलाइंस आपका, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग, मतलब बेसिक आपका फॉर द बैंक, ठीक है, हाउ मेनी एलसीज वी कैन अप्रेज और लाइक व्हेन इट कम्स टू द अप्रेजल पार्ट्स एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट वन, अदर इश्यूज रिलेटेड टू वर्किंग, ठीक है। सो फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, अब इसके अलावा भी जैसे वी हैव जैसे फैक्टरिंग, फोरफिटिंग है, वी हैव आपका कमर्शियल पेपर, सो दीज आर द अदर इंस्ट्रूमेंट्स विच कैन बी यूज फॉर द आपका नेटवर्किंग कैपिटल पर्पसेस और फॉर द आपका कैपिटल वर्किंग फाइनेंस पर्पस, ठीक है। I hope you guys getting these particular things clearly. If you have any doubt, please do let me know, ठीक है। थोड़ा सा आज यस, हाँ क्लियर है ना। So, किसी का कोई डाउट है तो प्लीज बताइएगा, ठीक है। एंड दोज हु आर वाचिंग इन रिकॉर्डेड, दे कैन मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन और यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम। दोज हु आर वाचिंग ऑन ऐप, देयर इज अ आपका चैट सेक्शन, जस्ट मेंशन ऑन दैट चैट, आई विल गेट बैक टू यू, राइट। चलो, सो वी हैव कमर्शियल पेपर, वी ऑल नो कमर्शियल पेपर, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ promissory note, ठीक है। बेसिकली कमर्शियल पेपर आर इशूड बाय द कंपनीज to fulfill their working capital requirement, ठीक है। तो this is one another tool आपका, जिसके थ्रू companies they can raise fund. Now as a bank we can आपका purchase those particular commercial paper, ठीक है। तो हमारा क्या रोल है यहाँ पे, we are buying those particular commercial paper and we are providing short term finance, ठीक है। So these are in the form of promissory note, ठीक है। highly rated corporates आपका PDs, FIs meet short term requirements, ठीक है। So tangible net worth more than 4 crore, sorry, ठीक है। Sanction working, please do cross check this one, ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा। Sanctioned working capital limits from a bank or financial institution, आपका account classified as standard asset and A3 rating as per the SEBI symbol, ठीक है। So these are the eligibility क्राइटेरियाज आपका। टेन्योर 7 to 1 years, everybody knows। इन्वेस्टर आपका इंडिविजुअल कैन बी कॉर्पोरेट बैंक्स एंड ऑल, सो वी कैन पार्टिसिपेट इन दिस वन, ठीक है। एडवांटेजेस आपका लोअर बोरोवर कॉस्ट and government registration, RBI circulated rate, this is okay. So these are the areas of this particular. So companies, they can fulfill their working capital requirements by issuing commercial paper, that is the main thing. They can have आपका factoring, they can have forfeiting, the tool also, ठीक है। These are the additional tools आपका, ठीक है। So we have factoring आपका, ठीक है। So factoring where bank they generally work as a factor, ठीक है, and this is an open account agreements between buyer and seller। तो जहाँ पे हम क्या करें, जैसे let's say your bank is working as a factor, ठीक है, आपका बैंक आपका फैक्टर की तरह काम कर रहा है, एंड देयर इज अ XYZ एक्सपोर्टर आपका, ठीक है। XYZ एक्सपोर्टर आपका है कोई, ठीक है, इसके लिए। सो नाउ दैट मीन्स XYZ दे हैव डन डिफरेंट आपका एक्सपोर्ट, उन्होंने एक्सपोर्ट किया A where their bill receivable is supposed that $1 million, ठीक है। दे हैव डन एक्सपोर्ट विद B आपका where their bill receivable is $10 million, ठीक है। दे हैव डन विद C आपका and their bill receivable is supposed at $5 million, ठीक है। तो ये आपका देखो, दिस इज एक्सपोर्टर हु इज डूइंग एक्सपोर्ट in different countries or different vendors आपका, ठीक है। Now all these bills receivables are like, ऐसा होता है ना कि like when we like issue the invoice and all, mostly they are based on the Usens bill. Usens bill means आपका जो date of shipments है उसके once you'll receive the documents and all, उसके after 30 days, 60 days, 90 days. It can be demand bill also. Demand bill भी है तो भी आपका डिमांड बिल की जैसे आपका शिपमेंट होगा, यू विल रिसीव आपका दैट लोडिंग बिल ऑफ लोडिंग डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं बेसिकली, ठीक है। दैट इज जनरली पार्ट ऑफ द एट द टाइम ऑफ शिपमेंट्स, ठीक है, आपका जब रिसीव करते हैं। सो बिल ऑफ लेडिंग उनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज जनरली पार्ट ऑफ, सो मीन्स आपका देयर इज अ एक्सपोर्टर हु इज डूइंग एक्सपोर्ट विद मल्टीपल बायर्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अब ये एक्सपोर्ट करेगा, ऑब्वियसली ही विल बी रिक्वायरिंग सम सॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल आल्सो, ठीक है। सो ही कैन प्रिपेयर फॉर द अनदर एक्सपोर्ट आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आर बैंक एज अ फैक्टर, he is what we are doing, we are handling all these ledger on behalf of इस आपका XYZ के जितने भी लेजर हैं, आपका ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, बिल्स रिसीवेबल्स हैं, वी आर हैंडलिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस,
एंड वी आर डिस्काउंटिंग बिल एट 75 टू 80% के रेंज में, ठीक है। जैसे क्या हो रहा है, ये बिल आपका पूरा हो गया तो हम उसको वी आर पेइंग 1 मिलियन का 70 टू 80%, ठीक है, राइट नाउ, ठीक है। जैसे आपका उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, then remaining things आपका the recovery and other things, the connection with the other banks and all, on behalf of this XYZ we are handling those particular things. कुछ दिन के बाद इसने ये किया, we are once we will receive the payments we will आपका pay the remaining one, ठीक है। it can be with or without recourse, ठीक है। then हमारे पास ये आया, इसने दूसरा ट्रेड किया, उस ट्रेड का हमने इसको अगेन फिर आपका 70 आपका 75 टू 80%, तीसरे ट्रेड का 70, तो he'll have अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एनी टाइम, ठीक है, एवरी टाइम, ठीक है। सो बेसिकली इसके पास जैसे ये आपका ट्रेड कर रहा है, सब कुछ हो रहा है डॉक्यूमेंट्स के बाद, उसके पास हम उसको पैसा देते जा रहे हैं, ठीक है। एंड वी आर जैसे जैसे उस बिल का डेट होगा, सो वील आल्सो गेट द मनी एंड वी आर डूइंग ऑन अ कमीशन बेसिस और आपका फी बेस्ड सर्विसेज, ठीक है। तो दैट इज आपका फैक्टरिंग। सो फैक्टरिंग वेयर इट इज ऑलवेज ऑन एन ओपन अकाउंट मीन्स इस XYZ के सारे एक्सपोर्ट्स बिल्स आर डिस्काउंटेड बाय a single bank, ठीक है। but in case of or and it can be with or without recourse and we do not doing some sort of upfront financing, ऐसा नहीं कि 1 million का बिल है we are paying the entire money, no, 75 to 80%। in case of forfeiting that is आपका ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन बेसिस, वहां पे we do not have any fixed agreement with the आपका a single bank, one transaction we did with bank ABC, another with आपका some other banks। और यहाँ पे जनरली क्या होगा आपका, बेसिकली वंस वी डन विद द ट्रांजेक्शन, जो एक्सपोर्टर है दैट विल एग्जिट फ्रॉम दिस वन, ऑल रिस्क एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू द आपका फाइनेंशियल बैंक्स और जो आपका फोरफिटर है उसके ऊपर, ठीक है। सो दैट इज द वन। सो आपका की फीचर्स कैन बी डन विद और विदाउट recourse to the client. Factor may manage credit control and sales ledger team. Bank may conduct factoring through subsidiaries or departmentally team. So they can have like ये आपका जैसे SBU होता है ना, SBU स्पेशल बिजनेस यूनिट आपका, या एक डिपार्ट मोस्टली इन पब्लिक सेक्टर बैंक इट इज अ डिपार्टमेंटल अप्रोच। अपफ्रंट पेमेंट परसेंटेज इज बेस्ड ऑन द क्रेडिट वर्थिनेस एंड ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस आपका जो इस पे चलते हैं वो ये हैं, ठीक है। मतलब दिस इज द सर्कुलर डेट एंड ऑल। बैंक फाइनेंस और टू फैक्टरिंग कंपनीज, 75% income is from the factoring, 70 greater asset are purchase financing receivables, ठीक है। then we have export financing, ठीक है, export financing also generally comes, तो these are the different आपका जैसे export financing है, bank finance to factoring आपका है, ठीक है सर। जैसे export finance is something आपका जैसे प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट्स, ठीक है, पूरा इन पे ना लेसन है आपके BFM के अंदर, हमने काफी डिटेल में डिस्कस भी किया, ठीक है। फोरफिटिंग है आपका INR डिनोमिनेटेड ट्रेड है, ठीक है। फोरफिटिंग मैंने आपको बताया इट इज आपका विदाउट रिकोर्स एंड 100%, इट इज बैक बाय LC। आपका विदाउट रिकोर्स है क्योंकि LC की गारंटी वहां पे ऑलरेडी है, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली द एक्सपोर्टर इज सेलिंग 100% बिल आपका, ठीक है। देयर इज नो आपका लाइक ऐसा कोई परमानेंट रिलेशन नहीं है बैंक के साथ कि हम सारे ट्रेड आप ही के साथ कराएंगे। दे आर डूइंग लाइक लेट्स से दिस इज द वन बिल आपका, वो हो सकता है कि जो बायर है उसका और बैंक का कुछ कनेक्शन है, देन दे हैव मेड दैट अरेंजमेंट कि वी विल फाइनेंस यू, और एल्स आपका कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। सो दीज आर द एरिया। सो विदाउट रिकोर्स आपका यूज एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस, डिस्काउंटेड बिल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द बायर्स ऑन ड्यू डेट, ठीक है। सो एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस आपका एग्जिम, ऑथराइज डीलर्स, कैटेगरी 1 बैंक्स, रेगुलेशंस आपका डेटेड ऑन दिस, ठीक है। ये रेगुलेशंस दिस इज बेसिकली आपका जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI और अदर रेगुलेटरी बॉडीज दे हैव provided some sort of guidelines आपका कि if you comes under this particular one, so these are the guidelines they must be met, ठीक है। INR denominated trade credit आपका, ठीक है, it is as simple as that, यार आपका pre shipment and post shipment loan and all, ठीक है। allow Indian importers to raise or it can be आपका it can be your ECB also, external commercial borrowings, ठीक है। So key INR from overseas, हाँ, if it is overseas lender, it is आपका external commercial borrowings in INR, ठीक है। We have INR denominated, we have आपका foreign currency denominated, ठीक है। So applicable to all parties except gold, applicable for all import export except gold as per the foreign trade policy, ठीक है। Non-capital goods and capital goods, ठीक है। Non-capital goods 1 years, आपका 5 years, ठीक है।
ECB का हमने मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड पढ़ा था ना, दैट इज समथिंग लिंक्ड विद दिस, ठीक है। नो रोल ओवर एक्सटेंशन अलाउ बियॉन्ड दी परमिसिबल पीरियड, लिमिट आपका 20 मिलियन इक्विवेलेंट्स पर ट्रांजेक्शन, बैंक सपोर्ट ऑथराइज्ड डीलर्स, कैटेगरी 1 बैंक्स may issue guarantee LUs or LOCs for 3 years. Cost, all in cost must align with the market condition. Working capital पे we have done lots of practice. So यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एरियाज को टच करेंगे, ठीक है। इट इज अ कैश टू कैश साइकिल बेसिकली, ठीक है। एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेसेस, ठीक है। सो मैनेजिंग दैट कैश थिंग्स इन ऑल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट वन, which of the following statement is true regarding working capital management? Now tell me guys, we have discussed this particular one in detail. आपका क्या होगा correct answer? The management of working capital involve both current asset and sources of finance to support them. Long term sources of finance are the only means to finance current asset. A longer working capital cycle increase the need for a current asset to support the business operation. What will be your correct answer? Anyone guys? Very basic question yaar, kya hoga? So statement 1 is true, statement 3rd is true, this is wrong. The long term sources of finance is not the only one. We have cash and equivalent also, that also support our working capital and all. Okay, so 1 and 3 means आपका option B must be right answer for this particular one. ठीक है, योगेश सर डिनर, आपका डिनर हो गया आज, बट थोड़ा सा मेरा गले में ना कल से दर्द हो रहा था, मैं छुट्टी पे था, बट आई कैन नॉट, आपका अभी इतना क्रूशियल टाइम है ना, तो हम अभी नहीं इसको मतलब वो कर पाएंगे, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस सेशन टुडे, ठीक है। कल हम लोग मॉर्निंग के अंदर विल डू द आपका ब्रह्मास्त्र सेशन फॉर मॉड्यूल बी। आप बस ABM में 50+ ले आओ, आगे का सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है। सो दैट इज द ओनली प्रॉमिस आई कैन डू। सो बस ABM में आप 50+ ले आओ एनी हाउ आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नीड फॉर वर्किंग कैपिटल, व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? योगेश सर लिखते रहते हैं ना कि आपका नीड है, आई एम वेरी टेंस्ड एंड ऑल। कल आपने रात ग्रुप में लिखा डरा दिया, मैं कहा 12 बजे इतना क्या टेंशन हो गया सर को, ठीक है। सो एनी हाउ मैनेज थिंग्स आपका बढ़िया से, आगे की जर्नी सॉलिड होने वाली है, ठीक है, टेंशन नहीं है। So public utility companies generally require higher amount of working capital. Public utility like आपका रेलवेज है, आपका जो ट्रेवल बसेस हैं, ठीक है, आपका या फिर एयरलाइंस है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई वाली हैं। सो दीज ऑल आर पब्लिक यूटिलिटी। तो ये कह रहा है कि इनको हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। ट्रेडिंग फर्म नीड मोर वर्किंग कैपिटल बट लेस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट आपका, ठीक है। A steady production policy throughout the year may increase inventory levels during the peak season. The longer the operating cycle, the higher the requirement of working capital. Seasonal business require the same amount, आपका same amount working capital in both peak and lean season आपका. So what will be your correct answer guys? क्या होगा correct answer आपका? तो statement 1 is 100% wrong, ठीक है। जो आपका जैसे इंडियन रेलवे है, दे नीड लेस वर्किंग कैपिटल, रीजन बीइंग आपका बिकॉज दे आर जनरेटिंग कैश ऑन डेली बेसिस, ठीक है। उनका कैश क्या हो रहा है कि पीपल आर बोर्डिंग एंड दे आर पेइंग फर्स्ट, पहले उनके पास टिकट के थ्रू पहले ही पैसा आ जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे टेंशन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी है तो एक महीने में कंज्यूम किया, अगले महीने बिल, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे, ठीक है। ट्रेडिंग फर्म नीड मोर वर्किंग कैपिटल बट लेस इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है आपका, जो बाय सेल में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। The steady production policy throughout the year may increase the inventory, yes. The longer the operating cycle, higher the requirements too. Seasonal businesses, no, they not required same आपका, it is as per the season आपका, ठीक है। So what will be your correct answer? 2 3 4, 2 3 4 means 2 3 4 आपका D should be right answer for this particular question, correct है? Yes, very good guys. Next one. Consider the following statement regarding factoring and forfeiting, ठीक है। these are the alternative source of finance आपका, ठीक है। So alternative source of finance for working capital, जिसमें हमने आपका नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज पढ़ी थी, या हमने कमर्शियल पेपर के बारे में डिस्कस किया था, या अदर एरियाज जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो क्या होगा करेक्ट आंसर दोस्तों? What will be your correct answer? In factoring, so these are the statements, sorry, 1 2 3
and 4 and 5 आपका 5 स्टेटमेंट, ठीक है. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका फैक्टरिंग, financier or factor may administer the sales ledger and control the credit, बिल्कुल सही है, ठीक है. Factoring can be done by banks either departmentally or through subsidies too. Forfeiting, the financier assume the risk of default by the importer and exporter is not liable आपका because these are backed by LC without recourse, with or without recourse, ठीक है. Forfeiting is used both domestic and international trade आपका no, they are आपका in majorly for the international, ठीक है. आपका fourth one is wrong, ठीक है. RBI allow authorized dealers one bank to offer export financing, sorry, export factoring on the non-recourse basis subject to certain conditions आपका, ठीक है. So that is also correct आपका, ठीक है. So 1 2 3 5 1 2 3 5 means option C will be right answer for this particular question. आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है, आंसर क्यों नहीं कर रहे दोस्तों. So only statement wrong was statement 4. Forfeiting is only used for export transactions, not for the international export transaction, not for the domestic one. Yes, yes, yes. हाँ, आ रहे हैं अभी, लेट आ रहे हैं. Which of the following statement incorrect regarding the assessment of working capital and lending methods? तीन मेथड हमने पढ़े थे, पहला मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड. नाउ यू हैव टू टेल दी, और ये क्वेश्चन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है अराउंड दीज मेथड्स आपका, स्पेशली दीज मेथड आपका, ये जो मेथड्स है ना इनके अराउंड ये बहुत बार आपको पूछा जाता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है. सो असेसमेंट ऑफ इन्वेंट्री टेक इनटू अकाउंट्स फैक्टर एज लीड टाइम, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ठीक है. रिसीवेबल असेसमेंट इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द इन्वेंट्री लेवल of the business, ठीक है. Receivable management is something which is linked with the market conditions आपका, ठीक है. It is decided by the market, how demand and supply and all, ठीक है. The first method of lending required the enterprise to bring net working capital net working capital at least of first method of lending required the enterprise to bring net working capital of at least 25% of total current asset. It should be आपका, ये क्या होना चाहिए आपका, वर्किंग कैपिटल गैप होना चाहिए था, ठीक है. स्टेटमेंट थर्ड आपका क्या कहते हो, स्टेटमेंट थर्ड के बारे में गाइस, ठीक है. स्टेटमेंट इट शुड बी वर्किंग कैपिटल गैप आपका, ठीक है. तो सेकंड मेथड आपका नेट वर्किंग कैपिटल का 25, हाँ ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है. According to the third method of lending, the enterprise must bring 100% in core current asset, 25% remaining asset of this. True. तो 1 and 5 only, ठीक है. अच्छा ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट 2 3 4 आपका, ठीक है. 2 3 4 मींस D must be right answer for this particular one. करेक्ट है, यस. तो D आपका, D देखो ये जो मेथड्स है ना, पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. प्लीज डू रिमेंबर दीज वन, दीज स्टेटमेंट्स आपका, इन स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा, दे विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है. चलो नेक्स्ट वन. अंडर द टर्नओवर मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल assessment, what percentage of enterprise annual turnover is assumed to be required as gross capital? कितना होना gross working capital? चलो ये नंबर वाला है, ये तो जल्दी से हो जाएगा सबसे. Everyone guys, quickly quickly quickly, क्या होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, कितना होना चाहिए आपका, 25%, ठीक है. सो इट विल बी आपका 25%. ये याद है ना, ये हमने किया था, आपका डिस्कस भी किया था, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट regarding the working capital management, ठीक है. So working capital management, and you have to find out the right statement related to this particular one, ठीक है. So what will be your correct answer? Working capital management, the management of working capital, both current asset and the sources of finance to support them, ठीक है. So first statement is true, ठीक है. So working capital is आपका how we calculate it is current asset versus current liabilities, ठीक है. Liabilities are basically source of finance. It can be long term also, but to finance your short term current your working requirements and all, ठीक है. Others आपका the current assets, ठीक है. Usually we use these particular one to pay off the short term debts or short term debt obligation and all, ठीक है. Long term sources of finance are the only means to
फाइनेंस करंट एसेट्स आपका, ठीक है. सो नॉट ओनली आपका, वी हैव इन शॉर्ट टर्म फाइनेंस आल्सो लाइक कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट. These are some instruments. Morning itself we discuss around these particular ones. So this is along with long term. We can have short term sources also to get. A longer working capital cycle increase the need for current assets to support the business operation 100% true. Okay, that cash to cash cycle. I hope you remember. Okay, morning itself we discuss around that particular one. Okay. So 1 in 3 means option B should be right answer for this particular one. Okay. So option second one was false because current assets are also financed through the short-term sources like bank overdraft and commercial paper or the cash credit and all. And usually these are आपका short-term source of finance for working capital. Correct है दोस्तों? Any doubt? If you have any doubt, please do let me know. ठीक है? So we are doing concept classes morning, and based on those particular concept, we are practicing things in the evening itself. Okay, tomorrow we'll be practicing 20 and 21 for in the morning session itself. Okay, we'll be discussing concept areas, and then evening we'll be discussing practice or cases around those particular one. Okay, next one. Consider the following statement regarding factor influencing the need for capital, working capital in a firm. Okay? So need for working capital of a firm. So this is the question. So what will be your correct answer? You have to find out the correct statements. Okay? So first one, आपका public utility companies like railways and all, okay, or electricity departments, okay, generally require a higher amount of working capital due to larger inventories. This is 100% wrong. आपका incorrect statement. Why this is incorrect? Because public utility companies like water supplying companies or आपका electricity or आपका railways, they have current earnings. ठीक है? So basically, let's say if we consume some electricity, we pay the monthly bills. ठीक है? And let's say if you consume some water supply and all, we pay monthly bills. Or आपका if you travel with the buses or आपका any transport company, ठीक है, your railways or any other one, ठीक है. So in that particular scenario, we first make the payments and then we travel. That means their cash generation is at higher side. Okay? They do not need long term or higher amount of working capital because they are simultaneously they are generating the cash amounts and all. Okay? So this is wrong. आपका trading firms need more working capital but less investment in fixed asset. This is 100% true. आपका यहाँ पे कोई challenge नहीं है. Steady production policy throughout the year may increase inventory levels during the off peak seasons and all. ठीक है, जो seasonal goods आपके होते हैं या जो productions वाले होते हैं, they can have this one. True. The longer the operating cycle, the higher the requirement for working capital. This was part of our very first slide of today's session or the concept class. ठीक है. Seasonal businesses require the same amount of working capital in both peak and slack season. No, this is wrong. Because in peak season, they will be requiring more and compared to the slack season. Okay? So what we have to find out correct statements means 2, 3, 4. 2, 3, 4 means आपका 2. So option D should be right answer for this particular question. Why you guys are not answering? At least try आपका. ये तो हमने पढ़ लिया morning में. So statement 1 is incorrect. Public utility firm required less working capital, not more. And why it is that we have discussed again. 5 आपका seasonal business require more working capital during the peak season आपका, ठीक है. So that is the one, right? चलो आगे बढ़ते हैं. Next question on your screen. Consider the following statement regarding sources of finance for current assets. Identify which of the following statements are correct. So regarding the sources of finance for current assets, and you have given 5 statements and you have to find out the correct statement. Why you guys are not answering, or I'm unable to answer, see your answers and all? No. Okay, मेरे side से सही है, ठीक है. चलो. So net working capital should ideally be financed through the short-term working sources like trade credits or bank overdrafts and all. No. When it comes to the net working capital, it ideally should finance through the stable sources or the long-term sources. First statement itself wrong आपका, ठीक है. देखो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ. अगर ऐसा कहीं से मिस हो गया, ठीक है, let's say आपका
ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में कुछ प्रॉब्लम आता है या अदर्स कोई भी ऐसे जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं, so your company like they may face some sort of illiquid situation at any point. If you'll have long term sources, they are like you'll have money in your account, so you can pay off your obligations and all. Okay, so accruals such as unpaid salaries and taxes are considered a form of short term finance. आपका ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट, देयर इज नो इशू विद दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, so basically आपका like they are considered as current asset. They are not considered as quick asset, but they are classified under the आपका current asset and all. ठीक है, trade credit is depend on the industry practice and credit worthiness of the firm. 100% true. Intercorporation deposit are secured and heavily regulated financial instruments. Intercorporate deposit, like we talk around the commercial paper and all, these are unsecured instruments. Okay, so this make this a statement wrong. Right, debenture issued to existing shareholders can be used for working capital finance. Yes. So 235 means option A should be right answer for this particular question. Correct है दोस्तों? Any doubt? If you have any doubt, please do let me know in the comments section. Okay? So statement 1 is incorrect. Net working capital should be financed through long-term sources like equity, long-term debt and all. Okay? Fourth one is, why this is? Because you'll have stable source of funding. Okay? Fourth one is incorrect. Intercorporate deposit are unsecured and are heavily आपका regulated. This is the one, not regulated. जैसे we have example of commercial paper. ठीक है, morning itself we discussed that particular tool and the uses of that particular one. ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपका उसी के ऊपर है. सो कमर्शियल पेपर, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग राइट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन. अब बताओ थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे क्योंकि अब हमारा साथ जो है वो लंबा चलने वाला है. ठीक है, दिस इज नॉट अबाउट की लाइक कुछ दिन हम लोग साथ में रहेंगे. ठीक है, विल बी टुगेदर टिल 30 आपका 30th ऑफ जून और 28th ऑफ जून द लास्ट पेपर. ठीक है, तो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन अगर करेंगे सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. अदरवाइज लाइक देयर इज नो use of these live session, we can do things in recorded itself, right? So consider the following statement about commercial paper. First one, आपका commercial paper are unsecured money market instrument issued in the form of promissory note. आपका 100% true. ठीक है, there is no doubt with this particular statement. ठीक है, CP can be issued with minimum denomination of आपका कितना होता है 5 lakhs. ठीक है, and multiple. ठीक है, so this is आपका wrong. CP must be issued in dematerialized form through a SEBI registered depositories. आपका again 100% correct आपका. ठीक है, there is no issue with this particular statement. ठीक है, statement 4, options such as call or put option are permitted on CP subject to RBI approvals. ठीक है, they are generally available to bonds only. ठीक है, in this short term instruments or money market instruments these are not available, I guess. ठीक है, this should be wrong आपका. ठीक है, so the maturity period of CP can range from 7 to 364 days or 1 year. Correct. CP cannot be underwritten or co-accepted by an institution. True आपका. ठीक है, next one, CP are typically issued at a discount of face value. Again true. ठीक है, so 1 3 5 6 7. ठीक है, 1 no आपका 1 3 no 1 3 5 6 7. D should be right answer for this one. Correct है. तो स्टेटमेंट आपका सेकंड वाज इनकरेक्ट. CP आर इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ 5 लाख एंड मल्टीपल. ठीक है, स्टेटमेंट 4 वाज इनकरेक्ट. ऑप्शन कॉल पुट आर नॉट परमिटेड ऑन CPs. रेस्ट ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, हाँ रेनबो सर ने आंसर किया. ठीक है, सो डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन. दिस कॉल पुट ऑप्शंस इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ CP आपका. ठीक है, और मोस्टली इन case of short term securities it is not available. It is generally available in the form of in the term of bonds आपका. ठीक है, we have callable bonds, puttable bonds आपका. ठीक है, and even that right is given to the issuer or the investors after a predetermined time duration. It is 2 years, 3 years and 4 years that depend on the maturity of that particular bond itself. All right guys, चलो आगे बढ़ते हैं. A company has following financial information. Their current asset is 2 lakh and current liabilities is आपका 1.20 lakh. ठीक है, $1,20,000. What is the company's working capital ratio? First you have to calculate the working capital ratio. What does it indicate about the financial health? So when it comes to the financial health आपका, ठीक है, so the good working capital ratio is आपका और current ratio is आपका
1.22 आपका 2, ठीक है. दिस इज द रेंज जो हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था. एंड इन दिस पर्टिकुलर केस वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. सो इट इज आपका 1.22 आपका कितना आएगा 1.666 आपका. दिस विल बी योर आंसर, ठीक है. सो बेसिकली देयर करंट रेशियो इज 1.6:1, ठीक है. दिस इज द करंट रेशियो, ठीक है. सो दैट मीन्स आपका which generally fall under the in between this particular one, that means their financial health is good आपका, ठीक है. So 1.67, yes, ideal working ratio, they are maintaining this particular one. There can be some sort of decision making questions around these particular things as well, ठीक है. So you have to be very careful around these type of questions, and they can give you some analysis also, like we have company A, B and C. The ratio is for this one is suppose at 0.50:1. It is आपका let's say it is आपका 1.5:1, ठीक है. and it is आपका 10:1, ठीक है. so कौन सी कंपनी अच्छे से मेंटेन करके चल रही है and all, ठीक है. and even the areas also about the statements की statement this company is having some sort of आपका like basically they are having some sort of problem with their overall liquidity because they have cash run only for the 6 months, ठीक है. 6 महीने के बाद they won't be have money in their hand to meet their obligations, short term obligations, ठीक है. If their requirement is 1 crore, that means they have only 50 lakh in their hand for the accounting period, ठीक है. In this case आपका this is very well defined, well designed, ठीक है. and आपका working capital ideal because it is in between आपका 1.2 to 2 आपका, and they are this is something related to underutilization of funds आपका, ठीक है. They are not using their money properly. This money can be invested in some areas and they can generate some sort of returns from that particular investment, and they are having some sort of they are losing some sort of your we can say they can losing some sort of opportunity cost in this particular one. All right guys, चलो आगे बढ़ते हैं. next one, consider the following statement regarding factoring and forfeiting, ठीक है. these are the additional tool of the working capital finance itself, ठीक है. so we have fund based, we have non fund based, ठीक है. non fund based basically it is आपका guarantee, financial guarantee, non financial guarantee. then we have some other areas also, ठीक है. so where we generally study around the commercial paper, factoring, आपका bill discounting, ठीक है, rediscounting or forfeiting, letter of credit. So these are the areas which we generally discuss in the morning session itself, ठीक है. So now the question is you have to find out the incorrect statement about the factoring and forfeiting, ठीक है. So in factoring, financier which is known as factor administer the sales ledger and control credit given to the buyers. True. Factoring can be done by banks either departmentally or through a subsidiary, or this is also correct. In factoring, the financier assume the risk of default by importers and exporters is not liable. This is also correct. Forfeiting is used for, no, it is generally used for आपका international trade आपका, ठीक है. So this is wrong. RBI allow authorized dealer category 1 bank to offer export factoring on non-recourse basis subject to certain conditions. These conditions we have already discussed in the morning. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. And that means option C should be right answer for this particular one. Okay? So forfeiting usually आपका for the export transactions, not for the domestic one, international export transaction and all. ठीक है. चलो next one. A company struggling with liquidity dues to liquidity due to a large proportion of its working capital being tied up with illiquid assets. Which component of working capital is most likely to causing the this issue? Okay. So basically, what happened? Company they have produced like that cash to cash cycles. In that cash to cash cycle, there are some issues with the overall management. It can be related to your, mostly it can be related to the inventory things. Okay? So option C should be right answer. Account receivables can be an issue, but this is not a, because we have some legal, like let's say if we have a bill of exchange, so the issuer that drawee, they cannot decline the payments and all. Okay? We know we are going to receive this bill after 30 days, 60 days or 90 days, whatever the date. Okay? Cash and equivalents, this is not an issue. Account payables, this is not an issue. Okay? The inventory things which can
create some sort of problems where we won't be able to sell those particular inventories into market, and we won't be able to convert that inventory into account receivables आपका. That is a major challenge which we generally face in this particular one. ठीक है, तो C is the right answer for this particular one. Correct है दोस्तों? Any question आपका? If you have any doubt, please do let me know in the comment section. हाँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. देन which of the following statement are not correct? Incorrect statement regarding assessment of working capital and lending methods. I hope you remember we discussed 3 methods of lending, first, second, third आपका in the name of that one, and based on that particular one we have this question. ठीक है, so you have to go through the question and you have to answer this particular one. Who will answer this particular question, guys? क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? क्या होगा करेक्ट आंसर इसके लिए? So the assessment of inventory take into account factors such as lead time, minimum order quantity and manufacturing आपका processes. ठीक है, this is true आपका. ठीक है, morning में ही we talk around this particular one. There is no issue with this statement. Receivable assessment is largely determined by the inventory level of the business. ठीक है, receivable assessment is largely determined by the inventory level of the business. ठीक है, what you say about this particular one? ठीक है, it should be around आपका market things. ठीक है, like the overall market demands or the market practices. ठीक है, not solely based on this particular one. ठीक है, I'll not go for this one and we'll recheck this one. ठीक है, the first method of lending require enterprise to bring in net working capital of at least 25% of total current asset. ठीक है, so the first method of lending require, no, this is wrong ना. कितना था आपका? 25% is fine. ठीक है, so what was the exact one आपका for this particular one, guys? ठीक है, it is not about the आपका bring, this is the second method आपका. ठीक है, जहाँ पे it is not bringing the net working capital 25%. It is the gap of the current asset and current liabilities to 25%. ठीक है, let's say आपका the gap is, let's say the current asset are आपका 1 crores and current liabilities are suppose that आपका 1.5 crores. ठीक है, so they have 50 lakh requirement, so that 50 lakhs आपका current affairs link should be आपका 25%. ठीक है, current assets आपका, sorry, current affairs it is coming again and again. ठीक है, this is also wrong. Second method of lending ask the enterprise to bring net working capital at least 25% of working capital gain आपका. ठीक है, so this is आपका क्या होगा? This is आपका यहाँ पे enterprise to bring net working capital of at least 25% of, no, this gap is in this case and this is the case. आपका यहाँ पे क्या होना है? Add the 25% of total current assets. Second method यहाँ पे होना चाहिए था total current assets and this should be आपका part of this particular one. Correct है? समझ में आ रहा है? मॉर्निंग इटसेल्फ वी डिस्कस अराउंड दीज पर्टिकुलर थिंग्स आप, और ये स्टेटमेंट ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज आपको करेंगे. ठीक है, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग. ये वाइस वर्सा इनको फ्लिप करोगे तब सही होगा. अकॉर्डिंग टू द थर्ड मेथड ऑफ लैंडिंग द एंटरप्राइज मस्ट ब्रिंग इन 100% ऑफ द कोर करंट एसेट्स एंड 25% रिमेनिंग एसेट्स इन ऑल. ठीक है, तो कितना था आपका? व्हाट वाज द ओवरऑल आपका रिक्वायरमेंट्स इन ऑल? ठीक है, सो नहीं, it is and 25% of remain 25% of remaining current asset नहीं आपका, it should be आपका 25% of gap as I can recall this one. ठीक है, so what we have to find out? Incorrect statement 2 3 4 5 सारे गलत हैं क्या? 2 3 4 5, no, we are doing some mistake. Then that means we have to check this particular one. Anyone who answer this? Okay, D आपका statement. Okay, this statement is right. Statement 5 आपका. ठीक है, the third method of lending 100% of core current asset and 25% of, okay, sorry, so this is right आपका. ठीक है, this is right. Just a minute. हाँ, so this statement is correct आपका. It is not with the gap, it is with the आपका current asset as net working capital. ठीक है, so that means this is also wrong. Now we'll go through the wrong statement. ठीक है, statement 2 आपका, because receivables are influenced by market practices, not by the inventory. ठीक है, this was right. ठीक है, statement 3 आपका, first method of lending required net working capital of 25% of working capital gap आपका. ठीक है, this was right. ये दोनों को हमें रिवर्स करना था एक्चुअली. ठीक है,
स्टेटमेंट 4 आपका इनकरेक्ट बिकॉज द सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग यूज द टोटल करंट एसेट ऑफ 25% networking requirements not the gap itself. ठीक है, so these were the one. So देखो बहुत हमने मॉर्निंग में भी इन पे बहुत सारा टाइम लगाया था एंड स्टिल आपका थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे. सो विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस ओनली वी कैन सॉर्ट आउट दीज पर्टिकुलर एरिया. इसलिए कॉन्सेप्ट वीडियोस आर मस्ट आपका. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दोस टाइप ऑफ क्लासेस एटलीस्ट कि हर एक टॉपिक से व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज दैट वी यू हैव टू गो थ्रू वंस आपका. ठीक है, सीआईबी एग्जाम है, विदाउट दैट पर्टिकुलर वन इट इज लाइक बिट टफर साइड. ठीक है, which of the following statement about the cash budget method of the working capital finance is are correct. ठीक है, so cash budget method से related आपका कौन सा statement क्या है आपका correct है. So what will be your correct answer? Anyone who remember this? So cash budget method require project daily cash. No, it is not daily. Daily is not possible actually. ठीक है, monthly, quarterly and yearly we generally do. ठीक है, पहला statement wrong है. ठीक है, only borrowers with working capital limit exceeding 5 crores can opt for the cash budget method. Yes, cash flow based lending methods is suited for business dealing with the seasonal products आपका. ठीक है, again a seasonal product आपका construction activities and order based activities. ठीक है, cash flow based method आपका which generally help to these particular one. The required contribution that is net working capital from the borrowers is at least 50% of peak cash deficit आपका. ठीक है, so 50% of peak cash deficit. No, it is how much आपका? It is 25%. ठीक है, तो उनका जो peak time में आपका जो overall cash है उसका जो deficit है that उसका 25% not 50%. This make this statement wrong. The peak level cash deficit is based on the projected cash budget statements submitted by the borrowers. This is correct. Yeah. So 2, 3, 5. What we have to find out correct statement 2, 3, 5. So option A should be right answer for this particular one. ठीक है, कोई आंसर नहीं कर पा रहा है, कैसे भैया ऐसे कैसे चलेगा दोस्तों? तो थोड़ा सा ध्यान रखें इनका, ये हेल्प करेंगे ऐसी चीजें आपका. नहीं, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट आपका. द प्रोजेक्टिंग डेली कैश फ्लोज इज नॉट फिजिबल और वी जनरली यूजुअली डू द आपका मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली. ठीक है, फोर्थ वन आपका it is required 25%, not the 50%. Which of the following source of finance is more suitable for a company that need a short-term cash infusion and has a strong customer credit but lack of immediate liquid? ठीक है, this is again a situation driven. ठीक है, so they have आपका strong they have suitable company they have a strong customer credit but lack of immediate liquidity. So what we can suggest them आपका they can go for cash credit, overdraft and all these kind of facilities. ठीक है, so overdraft arrangement आपका cash. Okay, no, that means if both are given we have to read source of finance is more suitable for a company that need a short term cash infusion and has strong customer. Okay, now I got this particular one. Okay, they have bills receivables in their hand but those are they are going to receive after 90 days, after 60 days and all. So bill discounting, I'll go with bill discounting now. Okay, so option C should be right answer for this one. Anyone? Option C, for sure option C will be right answer because they have customer credit आपका, they are going to receive these many payments and all, but the only issue or challenge they are facing, they are going to receive these particular bill or the dates on these bill of exchange or the any other instrument, that is the future date. They need immediate liquid amount. So what they can do in this situation, they can rediscount these they can discount these particular bills with some banks and all, right? Correct, यही होगा ना? Yes. ठीक है, so bill discounting allow a company to receive immediate cash flow by selling receivables to a bank at a discount rate. ठीक है, so company has a strong customer credit. This method source of liquidity without taking on an additional debt. ठीक है, तो यहाँ पे they are not have to take additional debt and all, and this will be the perfect match for the requirement of this company. Next one, which of the following are non-fund based limit? अब ये तो बता दीजिए, चलो क्या होगा आंसर? Anyone guys? So they have asked you non-fund based limit आपका. ठीक है, so non-fund based limit which is provided by bank, and what will be your correct answer? Cash credit is आपका fund based, overdraft fund based आपका. So what will be your correct answer? Bank guarantee or letter of credit. ठीक है, so bank guarantee or letter of credit provided by the bank itself. Yes, हाँ, Benny 100% true. ठीक है, बिल्कुल correct sir. So this is the one. Next one.
अंडर द टर्नओवर मेथड आपका वर्किंग कैपिटल असेसमेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एंटरप्राइज एनुअल टर्नओवर इज अज्यूम्ड टू बी रिक्वायर्ड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, कितना होना चाहिए आपका, ठीक है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का. सो द मेथड इज आपका टर्नओवर मेथड, ठीक है. परसेंटेज ऑफ एंटरप्राइज एनुअल टर्नओवर इज अज्यूम्ड टू रिक्वायर as gross working capital, it is how much, 25%, ठीक है. So 25%, that means option C should be right answer for this particular one, correct है. So आपका option C will be right answer for this one. So turnover method assume that 25% of enterprise annual turnover is required as a gross working capital, right. चलो next one guys. Okay, this is it. So very small unit आपका, and we did a small practice for this particular one, ठीक है. You can expect आपका 1 or 2 marks question again based on this one, important one, because companies, they approaches us for the different form of working capital requirements, and even this is a primary source of earning for, like in case of your wholesale business or the corporate business and all, ठीक है. So थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखेंगे. Alright guys, so this is it. Hope you enjoy this session, and if you have any doubt, please do mention into the comment section. Okay. So one thing guys, like those who are new, so morning we are doing the concept summary, ठीक है. So like today morning itself we discuss this particular topic in detail आपका, ठीक है. So tomorrow morning we will be discussing around the unit 20th and 21 term loan and one another आपका unit, ठीक है. Then tomorrow evening आपका at 9 PM we will be practicing a set of questions. तो आप लोग भी थोड़ा सा regular basis पे चीज़ों में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है. तो जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम लोग आपका मतलब लाइक देखो एबीएम का पेपर इज लाइक मॉडरेट, ठीक है, एवरी टाइम आपका. एंड फॉर बीएफएम वी आर डूइंग रेगुलर सेशंस आपका रीस्टार्ट सीरीज. वंस दैट रीस्टार्ट सीरीज विल ओवर, आई विल स्टार्ट अपलोडिंग और टेकिंग लाइव सेशन फॉर द केस स्टडीज. बट that restart series is must if you are going for June 2025 examination, ठीक है. So please do follow that particular one on regular basis. If you have missed session in the past, try to cover up that particular one, ठीक है. So like from today itself there will be module D session, ठीक है. So because module A, B, C, this is over now, ठीक है. So now only 6 units we have in module D. So 6 days आपका, then after 6 days we will start practicing case studies आपका again unit wise, ठीक है. So थोड़ा सा आप लोग अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, मतलब ट्राई आप लाइव में देखो, रिकॉर्डेड में देखो, एनी टाइम, बट मेक अ शेड्यूल कि आप रेगुलर बेसिस पे चीज़ों को देख रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है. तो अगर और कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, एंड इफ यू हैव सम फीडबैक सजेशन, डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन, और यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम. मैंने आपका BFM के ऑल PDFs आर अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फ्री मटेरियल सेक्शन. साइमल्टेनियसली आई विल स्टार्ट अपलोडिंग फॉर ABM ऑल्सो. तो थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं कुछ दिन आपका, ठीक है. 1 मंथ का रिक्वायरमेंट है, 40 डेज का आपका. And if you'll practice well, if you'll go through these particular things, practices, concepts and all, we will make this particular things possible. All right, guys. So this is it. Bye-bye. Take care all. I'll see you tomorrow morning at 7 AM. Thank you for joining this session.